हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो लेक्चर है, हम लोग आज सेल्फ एंड पर्सनालिटी के जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर देंगे आज। जैसे हमने 6 क्वेश्चन तक वो गए थे हम लोग। 1 सेकेंड, जस्ट गेट द 6 क्वेश्चन। सो हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ carry Horney's explanation of depression be different from the Alfred Adler? क्वेश्चन क्या बोलता है जो मतलब एक्सप्लेनेशन है of depression but different from अल्फ्रेड एडलर। जैसे हमने वो कार्ल यूंग जो एम्स एंड एस्पिरेशंस वाला जो हमने किया था ना, सारे जो अप्रोचेस पढ़ रहे थे, तो इसमें जो कैरन हॉर्नेज ने ना ऑप्टिमिस्टिक व्यू में अपना ह्यूमन लाइफ के बारे में मतलब थ्योरी दिया था, विच फोकसेस मोर ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड के टाइम में व्हेन डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट। तो तब की बात है, क्या बोलते हैं, जब वो बेसिक एंजाइटी डेवलप हो जाते पाए। एंड क्योंकि जो हमारा जो दूसरे चाइल्डहुड में अगर क्या बोल सकते हैं, जो गुस्सा और मतलब झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता था, है ना, तो वो देख के या फिर वो इनसिक्योर हो जाता था चाइल्ड। तो उसकी वजह से व्हाट यूज्ड टू हैपन कि पर्सन, जो चाइल्ड था, वो इनसिक्योर फील करता था एंड वो बेसिक एंजाइटी डेवलप हो जाता था। तो देयर ऐसे लिखने की जरूरत है देयर मैन। Horney would attribute the cause of depression to parental relation, parental with children which are characterized. And Alfred Adler बोलते हैं it gives greater importance to personal goals, because Alfred Adler बोलते हैं personal goals हमारे sources of motivation which are characterized by excessive interference. Deep anxiety would result, from the behavior child which is erratic, indifferent, and discouraging feelings of isolation and helplessness will also emerge. Alfred Adler would, on the other hand, attribute on the feelings of inadequacy and guilt. और inadequacy and guilt के बारे में डिप्रेशन बोलेंगे within the individual due to inability to achieve his or her personal goals. These goals provide an individual with security, क्योंकि ये पर्सनल गोल्स जो हैं, दे आर द सोर्स फॉर इंडिविजुअल, दीज आर पर्सनल गोल्स, है ना, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन. If individuals are not able to attain the goals and could not overcome inferiority, then it leads to depression. मतलब ये if ये goals attain नहीं कर पा रहा, वो अचीव नहीं कर पा रहा, then उनको वो क्या होगा कि डिप्रेशन हो सकता है. What is the main proportion of humanistic approach to personality? What did Maslow mean by self actualization? अब ये सेल्फ जो हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उसके बारे में बात करेंगे. ह्यूमनिस्टिक theories emphasize personal responsibility and innovative tendencies towards personal growth. They focus on the importance of people's subjective attitudes, feelings, and beliefs, especially with regard to self. According to humanistic approach, we human beings are most creative, growing, fully functioning, and self-actualizing people. Fully functioning persons, according to Rogers' theory, psychologically healthy persons वो लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू रॉजर क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकली हेल्दी पीपल जो होते हैं दे लिव लाइफ टू द फुलेस्ट. सॉरी, शॉक्स. हाय गाइस. सो हम लोग ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करें कि बोलते रॉजर्स बोलते हैं कि so according to Rogers, they say मतलब individual they live life to the fullest, they're psychologically healthy है ना, and they're very happy, they live in here and now, and they just trust their own feelings, they're sensitive to the needs of others, but they allow society to standards to shape their feelings or or actions to an excessive degree. Rogers suggests that each individual has a concept of ideal self. If there's a discrepancy between real self and ideal self, then individual develops maladjustment. Roger proposed two basic assumptions: human behavior and people is goal oriented and worthwhile. People always choose adaptive. मतलब ये self मतलब क्या है? यही बोल रहे कि
they live life to the fullest, they're psychologically healthy according to Rogers, and they are sensitive to their own feelings, and they are tells they can they do not allow society standards, मतलब जो society के हिसाब से चलना चाहिए या एक इंडिविजुअल होना चाहिए, वो उनके हिसाब से नहीं जाते, वो खुश रहते हैं अपने हाउ वॉट एवर दे आर। सो यहाँ उन्होंने दो एजम्पशंस बोला कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्ट एंड वर्थवाइल, पीपल ऑलवेज चूज अडेप्टिव एंड सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बिहेवियर। रॉजर्स बिलीव दैट many individuals fail to become fully functioning persons because they grow up in an atmosphere of conditional positive regard. Develop disordered self-concept which interferes with personal growth, such as people fail to self-actualization नहीं। All human beings desire unconditional freedom of choice, उनका खुद का होना चाहिए, है ना? There is no freedom of choice of self-actualization. Humanistic theories do deny the importance of past experiences. They generally focus on the present. तो past experiences नहीं देखती humanistic theories. They generally focus जो present में क्या हो रहा है. So Maslow's contribution to humanistic approach, Maslow ने self actualization बोला, जहाँ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पीपल अपने फुलेस्ट पोटेंशियल में पहुंच गए हैं, उनका एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ मैन हु हैज पोटेंशियलिटीज फॉर लव, जॉय एंड क्रिएटिव वर्क। अकॉर्डिंग टू हिम, ह्यूमंस आर बीइंग्स आर फ्री टू शेप द लाइफ एंड सेल्फ एक्चुअलाइज, कि वो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपना लाइफ खुद शेप कर सकते हैं एंड दे कैन सेल्फ एक्चुअलाइज देमसेल्व्स। Eighth question, discuss the main observational methods used in personality assessments. What problems do we face in using these methods? So, though observational method, which is a very powerful tool of psychological inquiry, it is an effective method of describing behavior. A scientific observation differs from day-to-day observation in many respects. Selection. Psychologists do not observe all the behavior that they encounter. They select a particular behavior for observation. Recording. While observing, a researcher records unselected behavior using different means such as marking tallies for the already identified behavior whenever they occur, taking notes for describing each activity in detail, shorthand or symbols, photographs, video recalling. मैंने रिकॉर्ड किया, सिलेक्ट किया, फिर अब क्या रहता है, आफ्टर द ऑब्जर्वेशन have been made, psychologists analyze whatever they have recorded with a view to derive some meaning out of it. Observation is a skill. A good observation is knows what he or she is looking for. Observation, observe करते हैं, whom she wants to observe, when the observation needs to be made, है ना? तो दो चीजें आती हैं, नॉन पार्टिसिपेंट और पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट में क्या होता है, वो फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जर्व करता है। द ऑब्जर्वर मे बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। इन द फर्स्ट केस द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड मे नॉट बी अवेयर ऑफ व्हाटएवर शी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन a teacher and a student. इंस्टॉल अ वीडियो कैमरा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल, ठीक है? तो पार्टिसिप मतलब आप बस एग्जांपल देख सकते हो, ये इंस्टॉल अ वीडियो कैमरा नहीं लिखो, ये ठीक नहीं है। पार्टिसिपेंट क्या है? इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर बिकम्स अ पार्ट ऑफ द स्कूल ग्रुप ऑफ पीपल बीइंग ऑब्जर्व्ड, मतलब यू पार्ट ऑफ इट, आप यार पास से कर सकते हो। इसमें नॉन में क्या था, नॉन पार्टिसिपेंट में आप दूर से कर रहे हो, पार। The observer takes time to establish a rapport with the group so that they start accepting him as one of the group members. The degree of the involvement of the observer with the group being observed would be very depending. Depending upon the study, क्या बात कर सकते, डिपेंड करता है। आप स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट देखते हैं, which are the two mostly used for structured personality test. अब स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है? द सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स। फर्स्ट, ये सेल्फ रिपोर्ट में याद रखना, ये सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं स्ट्रक्चर्ड वाले।
Questions are direct and structured. They are called self-report because the examinee has to respond objectively to the items of the measure, and his or her response are accepted as they are. They're objective in nature, and they deal with the present state of mind, deal with the nature and present state of mind. Self-report measures use inventories and questionnaires to access conscious part of personality. तो ये क्या करते हैं, इन्वेंटरीज यूज होती हैं, क्वेश्चनरीज यूज होते हैं टू एक्सेस कॉन्शियस पार्ट. गोल ऑफ द टेस्ट में भी रिवील्ड, जो गोल है वो रिवील हो सकता है. डीज टेस्ट एसेस ओनली कॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, कॉन्शियस पार्ट जो है. The tests depend on motivation and emotional state of examine. They are non-projective and direct inferences are made. Sorry. अब हम लोग देखते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स क्या. Eisner Personality Questionnaire (EPQ) was developed by Eisner to access two basic dimensions of personality, namely introverted or extroverted. Extroversion. Introvert, emotionally stable, emotionally unstable, neuroticism. फिर MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. It was developed by Atherton McKinley. It is found very effective in detecting psychopathology like hypo, जो diagnose करने के लिए depression, hysteria, है ना. It is divided into 10 subscales. It helps in clinical diagnosis of various mental disorders like hypochondriasis, depression, hysteria. ये तो दो बार लिख दिया. It has two sets, MMPI-1, MMPI. Nowadays, MMPI-2 is used. 566 statements है, affirmative statements. It judges each statement as true and false. MMPI is one of the very good tests for clinical purposes. MMPI किस लिए यूज होता है? It is very good test for clinical purposes. Indian version of MMPI is available named as Jodhpur Multiphasic Personality inventory. 16 PF questionnaire developed by Kettle identifies large set of personality descriptions subjected to factor analysis to identify basic personality structure. Subject responds to situation by choosing Frury alternatives. Test is being used as with high school level in India for career guidance and counseling. Problem faced by self-report measures. Social desirability. Tendency on part of the respondent to endorse items. Acquire science. Tendency to subject to agree with items. Testing and understanding personality require great skill. They require great skill. People become self-conscious, hesitate to share thoughts. तो अपने बारे में बहुत अवेयर हो जाते हैं and they hesitate कि बोला ठीक रहेगा नहीं रहेगा, है ना. It is done in a social desirable manner. So the real personality are not manifested. So real personality characteristics जो है they're not manifested properly. अब स्टेटेड कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टिव, हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे. सो मैं आपको इन क्लियरली समझा देता हूँ. Projective, describe any one projective technique. Projective techniques are personality widely used by psychologists. The most indirect methods to assess indirect है ये to assess personality. Psychoanalytic theory proposed behavior is also determined by unconscious forces. So projective techniques they assist to unconscious motives and feelings, relatively fully structured or poorly defined. Person being assessed is usually not told to the purpose. It is informed that there is no right or wrong responses. It is considered a reveal of a true and significant aspect of एक true या significant aspect निकालेगा personality का. The scoring and interpretation and projective are lengthy and subjective. Projective developed to assess unconscious motives, feelings, and conflicts are less structured or unstructured will allow individual to fall and to project his or her feelings and needs on that situation. Cannot be scored objectively. Objectively score नहीं होगा, rather than self the report होते हैं.
Use and interpretation of these tests require extensive training. Limitations: Rorschach टेस्ट जो हर्मन रोरशाक ने बनाया था, 10 blocks, 5 ब्लैक है और वाइट, 2 रेड है, 3 पेस्टल कलर्स. Blots are symmetrical design in with a specific shape or a form made by dropping an ink में. दो फ्रेजेस में आते हैं, परफॉर्मेंस फ्रेज और इंक्वायरी. फिर आते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT बाय मॉर्गन आरी. इस टेस्ट में 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड होते हैं and each card depicts one or more people in a variety of situations. So these are cards present one at a time, and subject is asked to tell a story describing situation present in the picture what led up to the situation. कि एक situation कार्ड ना जो प्रेजेंट होते हैं एक एक वन एट अ टाइम, और एक सब्जेक्ट को स्टोरी सुनाती है होती है कि उस सिचुएशन में क्या हो रहा है जो पिक्चर में दिखा रहे हैं. उर्मा उर्मा चौधरी ने Indian adaptation via TAT का, which is also available. Rosenwig's picture frustration study, PF study. How the study is how people express aggression in the face of frustrating situation. कि frustrating situation में how people express their anger. With cartoon-like pictures, like a series of simulations with one person, है ना? So I have to tell what the other frustrated person will say or do. कि आप क्या करते हो उससे. पारिक ने भी अडाप्ट किया है फॉर द इंडियन पॉपुलेशन. इंडियन अडाप्टेशन है इसका. फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की, इसमें आपको सेंटेंस दिया जाएगा, आपको कंप्लीट करना है. नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए हुए हैं, एंड you have to provide, the subject has to provide an ending कि सब्जेक्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा. फिर ड्रॉ पर्सन टेस्ट कि आपको एक पर्सन ड्रॉ करना पड़ेगा ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एंड देन फिगर आउट ऑफ एन ऑपोजिट सेक्स पर्सन कि ऑपोजिट सेक्स पर्सन है, फिगर आउट करना पड़ेगा. फाइनली द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी अबाउट द पर्सन एज इफ ही शी इज द कैरेक्टर. कि आपको फिर स्टोरी मतलब वो इस सब्जेक्ट को स्टोरी बताना पड़ेगा कि वो मतलब या लड़का लड़की वो कैरेक्टर में था, मतलब क्या कौन सा कैरेक्टर था इन नॉवल और प्ले. कोई ग्राफिक एम्फेसिस ऑन द एग्जांपल्स दिए हुए हैं. omission of facial suggests that the person tries to evade a highly conflict riddled interpersonal relationships. graphic emphasis on the neck suggests a lack of control over. तो यहाँ से 3 omissions हैं, सॉरी 3 एग्जांपल्स हैं. फिर यहाँ दिखा है, ये 11th क्वेश्चन है, which is the about what कार्ल रॉजर का थ्योरी टर्मिनोलॉजी बताना है इसमें. तो Arihant wants to become a singer even though he belongs to a family of doctors. Though his family members claim to love him but strongly disavow his choice. Arihant को सिंगर बनना है एंड उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर, मतलब उसकी फैमिली तो पूरी डॉक्टर्स हैं, उसको प्यार तो करते बट उसकी चॉइस से बहुत गुस्सा है, डिसअप्रूव चॉइस. तो इसमें क्या है, कार्ल रॉजर्स का जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का वो बताना चाहिए कि उसको क्या बोलते हैं, as the desire of Arihant wants to become a doctor, singer is contracted by his family. It results in a situation of a negative social conditions which will reduce his सेल्फ कॉन्सेप्ट. तो मतलब उसको सिंगर बनना है बट उसके पेरेंट्स नहीं मांगते, तो उसका सेल्फ स्टीम है ना, जो सब कुछ है, सेल्फ कॉन्सेप्ट वो रिड्यूस होते रहेगा, जितना था वो उससे रिड्यूस हो जाएगा. तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, मतलब कोई फेमिलियल प्रेशर नहीं होना चाहिए. रैशनल सेल्फ. His ideal self is that he wants to become a singer, but जो रियल सेल्फ है वो तो इज नॉट वन ड्यू टू वो रियल सेल्फ नहीं है उसके पास. तो डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड आइडियल सेल्फ इज रिजल्ट इन डिससैटिस्फैक्शन. तो उसको अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए कि उसको समझना चाहिए, ठीक है बनना है तो बन, है ना,
समझना चाहिए पेरेंट्स को, तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होना चाहिए। अगर उसको परस्यू चाहिए करनी है सिंगिंग, तो ऑफ कोर्स उसको उनके पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, तो फिर इट विल रिजल्ट इन डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस। सो गाइस, हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। If you guys liked it, then please do subscribe and I'll see you soon.